Well, good morning, Nazreen. Assalamu alaikum. This is Naeem Zafar coming to you live from Silicon Valley, California. तो another episode of एक idea. Normally आपको पता है यहाँ लोगों को entrepreneurs को invite करते हैं और उनसे बातें करते हैं कि अभी क्या आइडिया है, कैसे उसको शेप किया जाएगा ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें इन्वेस्टर्स को भी और कोलैबोरेटर्स को भी और कस्टमर्स को भी। तो आई होप आप भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे और अप्लाई करेंगे। तो आज का शो ज़रा मुख्तलिफ है। आज हमने गेस्ट स्पीकर नहीं बुलाया क्योंकि आपको काफ़ी लोगों से बात हुई है हमारी, काफ़ी एंटरप्रेन्योर से। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स जब के पास नहीं होती है कि हाउ टू डू मार्केट रिसर्च। दे डोंट नो व्हाट मार्केट रिसर्च रियली इज, एंड एनी टाइम दे ट्राई टू डू दे डोंट डू ए ग्रेट जॉब। एज अ रिजल्ट उनके आइडिया जो होते हैं आर इनकम्प्लीट और नॉट कंपेलिंग। तो पहले मैंने एक दो तीन और भी रिकॉर्ड किए थे कि हाउ टू बिल्ड ए फाइनेंशियल मॉडल, हाउ टू एस्टिमेट कितने पैसे चाहिए आपको, कब तक वो आपके काम करेंगे, तो वो एक कर चुके हैं। एक और मैं रिकॉर्डिंग की थी कि प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, तो वो बातें हम कर चुके हैं। आप पुराने शो जाके देख लें, हम आपको हम पोस्ट कर देंगे ये लिस्ट ऑफ ऑल द प्रीवियस शोज। लेकिन आज का शो जो है वो अबाउट मार्केट रिसर्च। तो इसमें मैं आपको ज़रा शेयर करता हूँ कि you can see a method of doing market research. So I want to share with you the screen, and then I will basically walk through the whole process of, let me just bring the screen up so I can see it. अच्छा देख लें। हाँ, so what we want you to be able to see it कि how to conduct market research. तो आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि मैं I have been working as an engineer in my first early days. Then I've been teaching entrepreneurship at University of California, Berkeley, and Brown University, and other Northeastern University. And I'm a practicing entrepreneur. तो अभी कंपनी भी चला रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए कि how to do market research is such an important topic, तो मैंने उसके लिए निकाल के किताब भी लिखी है। So this book जो है Market Research on a Shoestring is designed exactly for that. What I'm going to do is take some pieces from the book and summarize for you. ये सब किताबें Amazon पे भी हैं, naeemzafar.com पे भी हैं, and डाउनलोड भी कर सकते हैं वहां से। So let me talk about market research होती क्या है, क्यों करते हैं। अच्छा, so पहली तो बात है ना कि मार्केट रिसर्च जो लोग ज्यादा करते हैं, आमतौर पे कोई बंदा मिल भी जाए, कोई पोटेंशियल कस्टमर, उससे बातें करनी शुरू कर देते हैं। भाई देखो मैंने ये आइडिया है, ये बनाया है, आपको पसंद आया कि नहीं। यार ये को मार्केट रिसर्च है, ऐसे तो नहीं करते ना। अब दिखा रहे हो कि ये मेरी बिल्ली आपको अच्छी लगती है, तो क्या कहेंगे आगे से कि बड़ी अगली बिल्ली है, नहीं। तो इस तरह से नहीं करते। यू हैव टू डिस्टेंस योर सेल्फ इमोशनली एंड शो पीपल कि भाई ये आपको कोई तकलीफ है, अगर तकलीफ होगी तो कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे ना। सो मार्केट रिसर्च हैज टू डू विद अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स पेन, द अनमेट नीड। It has nothing to do with your solution, because whatever solution you have in mind is probably wrong, incomplete, or incorrect. The whole चक्कर ये होता है कि somehow to understand the problem from all dimension. When you understand the problem, solution is not the hardest part. लेकिन लोग जज्बाती होके, एक्साइटेड होके, एक हाँ जी ये मिल गया है, समझ आ गई, ये कर दूंगा मैं। यार सुनो तो सही, समझ तो लो पहले। तो हाउ डू यू नो यूर डन विद मार्केट रिसर्च। तो उसका चक्कर ये है कि ये 4 तस्वीरें अगर आप ड्रॉ कर सकें तो आप समझते हैं कि काफी हो गई है। ये 4 तस्वीरें लगती तो आसान है, लेकिन उनको बनाना is takes some hard work. So what are these pictures? We'll talk a little bit more about them, but just to give you an idea. On the top left में जो पिक्चर है ये बता रहा है कि who needs you more. तो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आपको, ये कुछ लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप कह रहे हैं who needs you more, there's somebody who's more desperate, more interested in using whatever you have to sell than other people. It's absolutely critical you find out who they are, because आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप सब पे स्प्रे नहीं कर सकते। एक मिल जाए जो who needs you more, then you focus on that segment to try to get some traction. अच्छा, टॉप राइट पे जो पिक्चर है that shows market size, एंड आपका सेगमेंट मार्केट साइज में क्या है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, how big is the market.
देखिए ना, अगर आप कोई, let's say you're making a new instrument for left-handed dentists. आप देखिए ना पाकिस्तान में कितने हैं लेफ्ट-हैंडेड डेंटिस्ट? Even if you get every one of them, तो 400 या 500 आपने बेचनी चीजें. Market size is too small. You want a market which is growing and large, or not large now, but growing to be large. So market sizing is very important. Then the bottom left पे है business model. Okay, who will pay you? How much you have to pay to make the product? What is your customer acquisition cost? ये मुनाफा है भी कि नहीं इसमें? Do you make money on each transaction? So drawing that picture is not easy. You have to figure out your cost, your customer is willing to pay, customer acquisition cost. और चौथी जो तस्वीर है ये राइट पे है, बॉटम राइट पे, पोजिशनिंग. अच्छा, जो भी एक्सिस आप चूज करें, what will make you stand out? What makes you different than other alternatives your customers have? तो ये 4 तस्वीरें अगर आप बना सकें तो आपके पास अभी अंडरस्टैंडिंग हो गई है. You notice this is all about understanding what customer need. तो कैसे करते हैं? अच्छा, काफी लोग, some of you want to do online surveys. यार ऑनलाइन सर्वे का है एक जगह, लेकिन that's not where you start. You start by face to face interviews या Zoom पे face to face पे इनफॉर्मल सी बातें करनी है टू अंडरस्टैंड भाई लोगों को कोई जरूरत भी है, चक्कर भी है, चाहिए कुछ, क्यों चाहिए. जो वो आपको समझ आ जाएगी कोई 10 15 20 इंटरव्यूज करने के बाद, फिर आप एक फोकस ग्रुप भी कर सकते हो. 4 बंदों को इकट्ठा ले आए, उनसे मिलकर बात कर ली, 6 बंदों से मिलकर ले आए, उनसे बात कर ली. जब वो इतने कर लोगे तो फिर समझ आएगी कि क्या सवाल पूछना है. Only then online surveys could be effective, because you don't even know what question to ask too soon, and there's an art to designing online survey. तो काफी ऑनलाइन पे गूगल करें, आपको है इसकी एडवाइस है कैसे करते हैं, लेकिन ऑनलाइन सर्वे शुड नॉट बी द स्टार्टिंग पॉइंट. अच्छा, कहाँ का आपके ये 5 तरीके आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ऑनलाइन सर्वे तो इवेंचुअली करेंगे, लेकिन आपको एक्सपर्ट्स मिलने चाहिए जिससे बात कर सकें, जो इसमें काम करते हो. तो लिंक्डइन कैन बी इफेक्टिव टूल टू फाइंडिंग सच एक्सपर्ट्स. ट्विटर को भी सर्च कर सकते हैं आप. फिर जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, हर इंडस्ट्री की एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है. उसके अमेरिका में भी है, 1800 से ज्यादा है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. फिनटेक, funeral homes, manufacturing, beauty salon, they all have trade organization. पाकिस्तान में भी है. My father used to work for the Pakistan towel export की organization. So they are organization, they have a lot of information about that industry, and they're usually a good source for such free information. Then you can also do some Google AdWord based advertising and get reaction from people to see are they even interested in the problem you want to solve. So eventually, why do you do market research? Because you want to be clear when you talk to customers, not during market research, eventually, okay, you're providing value to some target market segment from a source they trust at a price that makes sense. तो ये आपकी फाइनल मार्केट रिसर्च करने के बाद ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत होती है. तो जब तक इसको आर्टिकुलेट ना कर सकें, पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू, डोंट टेक यू सीरियसली. तो मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं उसमें हम जरा फोकस करेंगे. पहली बात तो ये है कि अप्रोक्सीमेटली आपको 50 या 100 के दरमियान डेटा पॉइंट चाहिए होंगे. लेकिन आप पहले जब 5 6 7 लोगों से बात करेंगे तो कहें यार ये बंदा को समझ नहीं आ रही, ये इसको he doesn't understand. Then next maybe 10 20 people you will see, okay, maybe this I'm not explaining it well. जब तक आप 30वीं 40वीं बातचीत में पहुंचेंगे फिर समझ आएगी यार मेरा कोई आइडिया है तो गलत है, कुछ और करना पड़ेगा. So it wants to, so there's what we need to do is figure out टेस्ट कैसे करते हैं. मेन चक्कर टेस्ट का ये है कि आपने जो किसी बंदे को प्रोडक्ट का सोच रहे हैं, आपने बंच ऑफ असम्पशंस बनाई हुई हैं कि असम्पशन ऐसे कि लोग इतने का ले लेंगे, ये बुढ़े लोग सिर्फ लेंगे, ये सिर्फ दुकान में बिकेगी या ऑनलाइन बिकेगी. दीज आर असम्पशंस. अब हमें नहीं पता ये असम्पशन सही है कि गलत है. So market research is to talk to potential users and potential customers to validate your assumption or invalidate them. Because you don't know which assumptions are right. You rather validate this before you make the product, because by the time you have
have spent too much time and money. You want to find out earlier, as soon as possible. Now realize customers may not be the users. अब देखें आप खिलौना अगर लें, बच्चे खिलौना का यूजर है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं दोज आर द कस्टमर. उनके जेब से पैसे निकल के आपकी जेब में आएंगे. आप अस्पताल में देखें तो कस्टमर में बी द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, users may be nurses and doctors. We don't know. So sometimes they're the same, sometimes they're not. So you have to please and do with both. So this is the point that you hypotheses, you talk to potential users and potential customer. You ask for 5 minutes, 10 minutes. अगर ज़्यादा दे देंगे तो ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट होंगे दे भी देंगे. And you have to do an interview. Main point of interview is listening. जब तक आप बातें करें जाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे. So you have to listen. You have to write things down. Sometimes मैं even कहता हूँ मैं रिकॉर्ड कर लूँ जी, मैं ये आप जो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भूल जाऊंगा, मैं रिकॉर्ड कर लूँ, तो मैं अपने फोन पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ. Because I want to pay full attention. Sometimes मैं नोट भी लेता हूँ, रिकॉर्ड भी करता हूँ, नोट भी लेता हूँ. कभी दो बंदे भी जा सकते हैं, एक बंदा नोट लिखे, एक बंदा बात करे, फिर दोनों बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं. So you have to have many conversations. So my idea का अगर B2B का बिजनेस है, तो आप किसी कंपनीज में कॉन्टेक्ट करें, मिड लेवल मैनेजर. टॉप मैनेजर बिजी होंगे, मिड मैनेजर्स लेवल इज ए गुड, इजी टू टॉक. उनको वैसे ही कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता, तो जब आप कॉल करेंगे आपसे ज़रा कुछ सवाल पूछने हैं तो बड़े वो खुशी से जवाब दे देते हैं. तो लोगों को ढूंढें, ईमेल करें या किसी से रेफरेंस से लें कि आपसे बात 10 मिनट की बात करनी है, मैं सोच रहे हैं इस इलाके में शायद कोई प्रॉब्लम हो, तो आपसे अगर बात कर सकें 10 मिनट आगे, आप एक्सपर्ट हैं इस बारे में. So then you can even say, भाई मैं स्टूडेंट हूँ या मैं शुरू कर रहा हूँ अभी, I don't know any solution yet, but we are thinking there must be a problem. तो we are thinking about what is the right solution. So जैसे हमारी खातून आई थी इस पे हमारे शो पे, so she was trying to figure out कि ये certain होते हैं worms को in the mangoes, they can fruit flies होती हैं उसमें, they can destroy a mango tree and get into the mango, उसको हो जाता है. So instead of telling that we have a solution, you try to ask question about आपकी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कभी आपने सोचा इसके बारे में. तो इस तरह के आप सवालात करेंगे उनसे, तो समझ जाएं कि प्रॉब्लम क्या है. तरीका ये होता है कि ऐसे नहीं करना है जैसे आपको इंटेरोगेट कर रहे हो. आपने ऐसे करना है जैसे दो दोस्त बैठे हुए हैं, आराम से खुल के बात कर रहे हैं. बिकॉज आप कुरेद के ऐसे पूछना चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है भी कि नहीं. अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो आपने अब तक इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, कहाँ देखा, क्यों नहीं मिला, क्यों डिसाइड नहीं किया, पैसे ज्यादा थे, कितने पैसों पे काम हो जाएगा, अगर इससे 10 रुपए से कम हो तो फिर ले लेंगे आप, लेकिन 20-30 बहुत महंगा हो जाएगा. जो भी है, ये सब सवाल जो हैं आपको शेप करेंगे कि क्या सोल्यूशन मुनासिब हो सकता है. Because if you find out that this is not a big problem, they don't care about this problem, they're not gonna, even if you make the product, why will they be interested in that? So you have to almost test them by asking the question about their method of buying. Later, in the end of the interview, you can test your hypotheses, not in the beginning. कह सकते हैं यार अगर ऐसे होता, एक डब्बा सा होता इतना बड़ा सा, वो अगर लटक जाए तो वो उसमें फ्लाइज को कैच कर लेगा, would that make sense? Maybe not. But कितना का, अगर ये 1000 रुपए का होगा फिर तो बहुत महंगा नहीं हो जाएगा, 100 रुपए का होना चाहिए, 10,000 का भी हो सकता है. तो you're just testing without selling. You almost have to disassociate yourself from the idea. कहते हैं यार आइडिया ऐसे ही पक्का नहीं है, सोच रहे थे कि ऐसी चीज हो सकती है, आपका क्या ख्याल है. So this is how you can get more honest reaction from people कि ये does it resonate with them or it does not. तो इंटरव्यूइंग की टेक्निक ये है कि आपने पहले जाने से पहले कुछ हाइपोथेसिस लिखती हैं कि I'm going to test, प्राइसिंग टेस्ट करनी है, what alternatives they look at, where have they looked, these are my 3 or 4 things I want to test. So Jen, when you meet with a person, either in person or फोन पे भी तो खैर हो सकता है, लेकिन अगर देख सकें तो जूम पे कर लें तो आसानी होती है. Try to understand about what is their pain point. Your best you ask a question, best thing you can say is why. अच्छा, tell me more. अच्छा फिर कैसे. इस तरह के आप जवाब देंगे ना तो अगला बंदा खुद फिर आपको बताएगा.
अगर आप उसको लेक्चर देना शुरू कर देंगे तो वो पे चू हो जाएगा. So this is the key point. Do not talk about your solution. Try to understand the problem. That's market research. So मैं जब भेजता हूँ अपने students को, मैं भी जाता हूँ. So जैसे I just wanna learn about this thing. I'm just learning about this and seeing is there a possible solution. So just wanna ask you for a few questions. हाँ जी, मुझे वो किसी ने भेजा था, जाने वाले ने भेजा था. आप या अगर आप लम्स के बंदे हैं या आप किसी और पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं तो कि जी आप भी पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैं भी वहीं रिसेंटली वहीं से पढ़ा हुआ हूँ. फाइंड सम कॉमन एंगल ताकि लोग विल बी विलिंग टू टॉक टू यू. Could be alumni network, which is a very effective way to find other people. Conferences, shows, जैसे idea जिसमें अगर events होते हैं, that's another way to find out. And then you start by saying, देखिए मेरा नाम आयशा है, मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ इस यूनिवर्सिटी में या इस कॉलेज में, या मेरा ये टीममेट है, एंड हमें असलम साहब ने बताया था आपके बारे में, तो उसकी वजह से हमने कहा आपसे कुछ दोस्त बात कर सकें, आप इस बारे में एक्सपर्ट हैं. हम ये ट्रकिंग में सोच रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकी है एडवांस सॉफ्टवेयर के साथ. आप क्योंकि आपके ट्रकिंग में एक्सपर्ट है, आपने वहाँ 10 साल काम किया उस इंडस्ट्री में, तो आपसे बस थोड़ा सा सवाल करना चाह रहा था मैं. सो दिस इज द सेटअप. कभी कहेंगे जी आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, व्हाट्स योर आइडिया. डू नॉट आंसर दैट क्वेश्चन. या आपका आंसर होगा जो स्लाइड में लिखा है नीचे कि आई विल बी हैप्पी टू टेल यू व्हाट वी डूइंग इफ यू डोंट माइंड, आपका टाइम वैल्यूएबल है, लेट मी आंसर अ फ्यू क्वेश्चन. आपको आखिर में बता दूंगा. आखिर में लोग भूल जाते हैं, कोई नहीं पूछता, बिकॉज दे आर हैप्पी विद व्हाट दे सेड. तो अगर बता पूछ भी लेंगे, इंसिस्ट भी करें, मैं कहता हूँ यार अभी तो मुझे नहीं पता कि आई डोंट नो इफ देयर इज अ सॉल्यूशन, देयर प्रॉब्ली इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट. फिर घर जाके सोचेंगे कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. सो यू रियली डू नॉट वांट टू गेट इनटू द सॉल्यूशन, यू वांट टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम. At the end, like I said, you can say अगर होता, just for imagine, अगर ऐसा कोई चीज solution होता, वो कोई मुनासिब लगता है कि नहीं लगता. So you're testing without saying it's my idea. एक दफा कह देंगे कि ये मेरी बिल्ली है, तो फिर लोग आपको सीधी नहीं बताएंगे कितनी बिल्ली है. So best kind of question, the open-ended question. Help me understand. What do you mean? अच्छा, why? इस तरह के सवाल करने is very effective. Because when you keep like this, people then begin to explain more and more. They love to explain. So how do you close it? उससे पूछें कि जी is there anything else मैंने आपसे पूछनी थी, आपने नहीं, खाली मैं पूछना भूल गया. Anything else you should tell me. फिर उनका शुक्रिया अदा करें. फिर पूछें कि is there anybody else I can talk to because you know other people. That's the reference you are getting for the next interview. फिर मैं ये भी पूछता हूँ कि जी आपका अगर मुनासिब समझें, मैं 2 हफ्ते में 4 हफ्ते में वापस आ सकता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, अगर सोल्यूशन कोई नजर आ गया तो आपसे दोबारा मैं राय लेना चाहता हूँ. मोस्ट पीपल से हाँ ठीक है आ जाओ. तो बाद में फिर थैंक यू रोड भेजो और फटाफट लिख के 10 मिनट लिख के सब नोट लिखो जो समझ आई थी, क्या समझे, क्या समझ आई. सो दिस इज हाउ यू डू इट. मोर यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मोर यू विल बी एबल टू कम अप विद द राइट सोल्यूशन. हालांकि मैंने बेशुमार एंटरप्रेन्योर से बात की है, पाकिस्तान से भी, अमेरिका से भी, ये नहीं करते. मार्केट रिसर्च करने समझते हैं कि बड़ा मुश्किल है, कोई और कर देगा. यार अगर आपको पता नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व कैसे करोगे. So we talked about that कि आप open-ended question कर रहे हो, introducing yourself, you're not talking about the idea. The reason is you're trying to avoid what's called confirmation bias. Confirmation bias होती है, शिकंजा लगा होता है आपके जहन में कि भाई ये करना तो ऐसे ही करना है. तो जब कुछ सवाल करते हैं, the moment he says something, देखें मैंने वही सोच रहा था, मैं भी बिल्कुल सही बात है. Don't do that. आपका लेवल ऑफ स्केप्टिसिज्म होना चाहिए काफी ज्यादा. आपका स्केप्टिसिज्म ऐसा होना चाहिए कि जैसे ये बंदा मुझे कोई पुरानी गाड़ी बेच रहा है, मैं इससे कितने सवाल पूछ लूं, कुछ ना कुछ गलती तो होगी इसमें. अपने आइडिया से इतना स्केप्टिकल होना चाहिए ताकि अपने बंदे को बताइए यार टायर को तो देख, टायर बिल्कुल घिसे हुए हैं. देन यू विल अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर टू इज अब्सॉर्ब विद योर ओन आइडिया. You do not want to have confirmation bias. So this is after talking to these people, then you'll begin to understand who needs you more, which has the most pain. Because you have limited resources, you have to identify some segment जो कि देखिए हम आपकी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि आपके बच्चों को वो हेल्प करेगी एसएटी एग्जाम के प्रेप के लिए, जो अमेरिका में या
यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, आपके मैथ स्कोर को प्रेप करेगी. Who needs you more? Is the students or the teachers or the parents? I don't know. We have to find out, talk to enough people to find out who will be willing to pay, who has this problem कि बच्चा इस रात में मेहनत कर ले और SAT में एग्जाम में उसके अच्छे मार्क आ जाएं. Then प्राइवेट स्कूल के बच्चे या पब्लिक स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे या बच्चे जो कि अभी कॉलेज में पहुंच गए लेकिन खुश नहीं हैं, अपनी करना चाहते हैं, या some बच्चे they already have siblings in America or in other universities. Even वैसे लंच में भी SAT वाला इस्तेमाल होता है. तो you have to find out who needs you. किस सेगमेंट में ज्यादा आपकी है अट्रैक्शन, उस सेगमेंट पे फोकस करो. Then you know where to find those people. एक दफा उसमें सक्सीड हो जाएंगे, you can sell to other people, but you have to find who needs you more initially. तो LinkedIn भी मैं इस्तेमाल करता हूँ. LinkedIn में सर्च भी है. You may have to upgrade for 1-2 महीने के लिए to premium account, but you can find any expert. लिखते हैं इसमें कीवर्ड्स लिख दो, लिस्ट आ जाती है लोग जो होते हैं. Then you can send it in mail. In mail is a special email when you can say unknown person to you. They will forward the email even if you're not connected to this person. He'll tell you who are you connected with this person between you and कौन है. तो आप इसमें ईमेल सकते हैं कि भाई आप यू आर कनेक्टेड विद दिस साहब, मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, उनसे 10 मिनट बात करनी है, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं. सो आई हैव यूज्ड दैट टेक्निक टू फाइंड रेलेवेंट पीपल ऑन लिंक्डइन. उनसे 5 मिनट की बात, 10 मिनट की बात, आधे घंटे की बात हो जाती है. देयर इज नो मनी एक्सचेंज, इट्स जस्ट अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन. पीपल लव व्हेन समबडी कंसीडर्स देम एन एक्सपर्ट, उनसे राय पूछना चाहता है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग. देखें, सारे जो सवालात हैं इज नथिंग टू डू विद योर सोल्यूशन. सारे सवालात जो हैं दे आर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर पेन पॉइंट. कैसे खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, क्यों नहीं खरीदते हैं, कौन डिसीजन करता है, क्या पहले आपने देखा था, क्यों नहीं लिया था. तो ऑल दीज क्वेश्चंस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन देन यू कैन थिंक ऑफ द राइट सोल्यूशन. तो ये भी आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे आप गूगल एडवर्ड्स इज कुड बी अनदर वे. यू नो दैट व्हेन यू सर्च फॉर समथिंग लाइक पेन पैल, ये राइट हैंड साइड पे सब एड्स होते हैं. You can even create your own ad for the product to see if anybody clicks on it or not. तो वो $5, $10, $20 की आपकी इन्वेस्टमेंट है. Get an account, write some ad. अगर ये कोई बंदा क्लिक ही नहीं कर रहा आप एड पे, प्रोडक्ट बनाने की क्या जरूरत है. अगर अब नहीं करा तो फिर बाद में क्यों क्लिक करेगा. So this is an idea you can test your idea कि बंदा इसमें इंटरेस्टेड भी है कि नहीं, because you have to find who needs you more. And that's what you're not going to find till you do this market research. You have limited resources. Find the red sliver who needs you more. अच्छा, पोजिशनिंग की जो बात कर रहा था यही है कि you can check the axes. देखें आप आपके पास आप बात कर रहे हैं, जैसे आप टेक ए सिंपल एग्जांपल, गाड़ी की बात कर रहे हैं. तो आपके पास कोई फैंसी गाड़ी हो, जैसे फरारी, पोर्शे. You're the marketing manager for Ferrari. What will be the axis will make your car stand out? So x-axis हो सकता है high performance. This will be low performance. Then y-axis हो सकता है कि cool image. So with the cool image, and bottom will be not cool image. Cool image, high performance, Ferrari will be here. लेकिन आप कोई और गाड़ी देखो, जैसे Honda Civic देखो, then आपकी एक्सिस आप डिफरेंट चूज करोगे. आप चूज करेंगे जी रिलायबिलिटी, हाई रिलायबल, लो रिलायबल. वाई एक्सिस हो सकता है कि गुड रीसेल वैल्यू, बैड रीसेल वैल्यू. उसमें होंडा सिविक या टोयोटा टॉप राइट पे होगा, लेकिन फरारी कहाँ होगी. फरारी यहाँ लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट पे होगी, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत खराब होती है और रिलायबल भी नहीं है, टूट जाती है हमेशा. तो पॉइंट इज, based on what your product is, you can decide which axis will differentiate you from competitors. So you have to be able to do this only after you understand competitor hain kya. Best way to find out who your competition is, you Google for your own solution. Search karo, apne jo banana uske, that's what your customer will do. See, every name which shows up is your competitor. कि आपका कस्टमर जब रिसर्च करेगा, सर्च करेगा जो मुझे चाहिए कि
I need some software test score improve करना है. जो भी जवाब आ जाएंगे, ads आ जाएंगे, those are the ads, those will be your competition. You need to study each one of them so you could be better than them. So this, once you have done all this, now you're ready to, at some point, will be ready to pitch your ideas, because this idea will be pitched to all kinds of people, investors, mentors, employees. So you have to synthesize after market research, refining your idea in a 5 minute, 6 minute की presentation में. And that's what we do in this show. You come, you have a 5 to 10 minute presentation, and we help you refine it. And this is what, you basically, you want to do this presentation के पहले स्लाइड पे, इसको स्लाइड 0 मैं कहता हूं, जिसमें सिर्फ कंपनी का नाम हो, आप पूरी बात बताएं कि आपकी, why should I listen to you? What is the idea? How is it relevant? How does it make sense? And then you show simple slides. Slide में have numbers, data, charts, graphs. आपके जो मुंह से आ रहा है वो, you're telling a story. Slides are props which will help you tell the story. So this is how you need to practice how to become a storyteller, how to tell a complete story about your business, so people will be attracted to it once you have done the market research. So that's why when time comes to summarizing, you want to be able to talk without reading your slides. You want to always ask the question, भाई मैं ये slide क्यों बना रहा हूँ? What don't they believe, my audience, कि after seeing the slide कहेंगे हाँ अच्छा अब समझ आई. That should be the title of the slide. Title of the slide should not be problem. It should be grain spoilage is the biggest problem in Pakistan agriculture. That's the title of the slide. Then slide will have charts, data, numbers to prove the point. आप खुद कहानी बना रहे हैं. So एक idea show में यही है ना, आपको पता, we welcome you all to come join the show. It's a 30-minute live YouTube show जिस पे आप देख रहे हैं अभी. And we basically educate our audience कि कैसे एक idea को लेके, कैसे market research करके, कैसे present करते हैं, so you can find investors, customers, and collaborators. So that's why you have, because before you need money for any of these big ideas. So that's why you want to be able to tell people you have identified a problem, you have a team, you have a pitch deck, a slide, 10-15 slide ka, and then a 1-page executive summary. This is what you need to start approaching investors, because any big business is going to require money. Money will come from investors. So that's why you don't want to talk to people, be secretive, annoying, and boring. You want to understand it, able to energetically talk about your idea. That's why you need the market research, because this will give you the confidence and the knowledge necessary to engage potential audience, customers, investors, and employees. So this is when you know your customer ready, investor ready. You have a strong conviction कि ये problem solve करनी है, और आपने मार्केट रिसर्च कंप्लीट कर ली है, आपके पास कोर टीम भी है, 2-3 लोग जितने भी हैं, you have clarity के what do you need money wise, people wise, and you have some proof के लोग वाकई इसको खरीदना चाहते हैं. So दिए 5 चीजें आपको चेक कर दें, फिर you are investor ready. So our job is to educate you, teach you, so you can become investor ready. And so we have looked at some of these things before. Elevator pitches, in which you can very quickly tell people what problem you're solving. You only do that once you understand the problem. Just to finish, I'm just going to show you this 10th slide, because this is an investor pitch you should be preparing yourself. Team में कौन है? Are they motivated? Are they relevant? Unmet need क्या है? How did we discover it? Alternative लोगों के पास क्या है? That's your competition. आपका solution क्या है? What is your unfair advantage? Unique value selling proposition. Why us? Why now? उसके बाद go to market plan. क्या प्राइस पे बेचेंगे? कहाँ से बेचेंगे? किस जगह बेचेंगे? दुकान में बेचेंगे? ऑनलाइन बेचेंगे? That's channel. Any partnerships you will need to spread the word. Business model क्या है? कैसे पैसे बनाएंगे? क्या progress हो चुकी है अब तक? क्या milestone आने वाले हैं अगले 12-18 महीने में? Or what do you need? How much money you need will take you from what stage to what stage. So this is the gist, what you're preparing. All the market research goes into creating this presentation and the clarity of mind. तो ये चक्कर है.
So I hope you learned something. Do the market research continuously. I'm always doing market research. Anytime I meet people, I'm asking questions, learning more about it, so I can refine my product idea. आप करो, and inshallah, looking forward to seeing you एक idea show पे in the future episode. Allah Hafiz.